Hello everyone, welcome to Kids English online classes. So this is your lecture number 3 of mathematics. We are going to start with chapter number 2, large numbers. So open your page number 101 of your textbook and carry your notebook and pencil with you all before starting the lecture. Notebook means your rough book for the rough work or anything else which we require during the lecture. आप आपके साथ आपकी पेंसिल, पेन, रफ नोटबुक और टेक्स्ट बुक लेकर बैठेंगे जब आप ये लेक्चर देखेंगे. So we'll start with exercise 2.1. Question number 1 is mark the periods using commas in the following number. Okay, so what we have to mark is we have to mark the period using commas. So first one is, let me write your number on the screen. Question number 1, first one. Okay, 2 6 3 7 1 4 5. Okay, this is your number which is given in your textbook. ये number आपके textbook में दिया है question number 1 पर. So we have to put commas in this number. हम ये numbers में क्या डालना है, हमें comma डालना है. So according to Indian system के हिसाब से हम 3 numbers से पहले comma डालते. So 1 2 3, here 1 comma, then 2. Okay, so we'll read it as ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Okay, so 26,37,145. This is the way. सबसे पहले हम 3 numbers से पहले कॉमा डालेंगे, बाद में 2 numbers से पहले. Okay, second one, 4 3 6 7 2 0 1. So again 4 3 6 7 2 0 1, comma before 3 numbers means here and then here. So it is read as 43,600. Okay, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 43 lakh 67,201. Third one means C. Okay, let me write here C, A, B and C. Okay, this is your A, B, and now I'm going to do C1. C1 is 1 7 8 6 3 9 8 2. Okay, this is your number. So I will write the number again, 1 7 8 6 3 9 8 2. Before 3 numbers 1 comma here, then next 2 2. So it will be 1,78,63,982. Next D1, 60405,107, commas 60405,107, comma before 3 number, then 2 2. So 6 crore 4,51,5,107. Okay, next E. E1 is 5 5 0 6 4 0 0 1 7. So before 3 number 1 2 2. Okay, 55 crore 6,40,070. This will be your answer. Okay, next we will go to question number 2. In this question
Question number 2. Write the following numbers using a place value chart. हमें इसमें क्या यूज करना है? We have to use place value chart. Okay. So what is a place value chart? Place value chart क्या होता है? It starts from ones. Place value chart किसे कहा जाता? It starts from ones, tens, hundred, ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh. Okay. So this is known as place value chart. इसे कहा जाता है place value chart. So in the place of ones, ones में क्या आएगा हमारा? Ones, thousands, lakh and crore. Crores. Okay. So in the ones में क्या क्या आएगा? Ones means ones, tens and hundreds. Ones, tens and hundreds किसके अंदर आएंगे? Ones के अंदर. Thousand means thousand, th for thousand, double th for 10,000. Lakh for l for lakh, tl for 10 lakh, and crore, c for crore and tc for 10 crore. You have to remember this very properly. Okay. आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये रिमेम्बर याद रखना, और हमारे सारे क्वेश्चंस इस पर डिपेंडेंट है जो भी हम आगे करने वाले हैं. तो मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये पार्ट रेटिफाई कर, एकदम अच्छे से लर्न कर. एंड इट इज नोन एज इंडियन सिस्टम. इसे कहा जाता इंडियन सिस्टम. इंडियन सिस्टम. ओके. इंडियन सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. Next, we are going to study international system. Now, in international systems, international system. We start with ones, 1000, million and billion. Okay, ones, 1000, million and billion. So again in the place of ones, O for ones, T for tens, H for 100. In place of 1000, TH for 1000, double TH for 10,000, and HTH means 100,000. Okay, we use this in international system. हम international system में क्या use करेंगे? We are using 100,000. Okay, HTH means 100,000. Next is million, M for million, TM for 10 million, and HM for 100 million. Billion, B for billion, BHB, TB 10 billion, and HP 100 billion. Okay,
So this is your international system. And in international system, if a number is like this, say it's 0, 5, 7, 8, 9, whatever may be the number कोई भी हो, हम 3 numbers के बाद ही comma put कर, okay? बट इन इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में हम हमेशा 3 numbers के पहले कॉमा पुट करेंगे, ओके? ऑलवेज, हमेशा 3 numbers से पहले. इन इंडियन सिस्टम हम 3 numbers, सपोज दिस इज योर नंबर, अगर आपको इसको इंडियन सिस्टम में करना है तो पहले हम 3 देन 2, पहले 3 नंबर से पहले कॉमा लिखेंगे, उसके बाद 2 देन अगेन 2 2 2 2, इट गोज लाइक दिस. बट इन इंटरनेशनल सिस्टम हमेशा एवरी टाइम वी हैव टू पुट कॉमा बिफोर 3 numbers. हम हर वक्त हमें 3 numbers से पहले ही कॉमा डालना है, ओके? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2, write the following numbers using a place value chart. So first what you will do, you will draw a place value chart in your notebook. Write question number 2, A1, your number is 3 6 7 2 8 9 1, okay? You will draw a chart over ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, okay? This is the way you will draw the table. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. 1 in place of ones. This 1 is in place of ones. 9 is in place of tens. 8 is in place of 100. 2 is in place of 1000. 7 is in place of 7,000. 6 is in place of lakh and 3 is in place of 10 lakh. So this is the way you will draw a place value chart and you will write the numbers. Okay. Now second one. Write the second question which is given in your textbook. That is, second one is 5,83,000. Okay. B1, 5,83,000 59. Sorry. 5,83,059 lakh 245. So this is in crore. So again you have to draw one column of crore and you will draw new column for every sum. आप हर सम के लिए एक न्यू कॉलम बनाएंगे. ओके. सो अगेन 1 is in place of ones, 4 is in place of tens, 2 is in place of 100, 9 is in place of 1000, 5 in place of 10,000, 3 in place of lakh, 8 in place of 10 lakh and 5 in place of crore. So 5 crore 83 lakh 59,241. This is your answer of question number 2. Next we will do with question number 3. So again you will draw a new table for third one, C1.
So C1 is 479 27 045. Okay, 5 is in place of ones, 4 is in place of tens, 0 in place of 100, 7 in place of 1000, 2 in place of 10,000, 9 in place of lakh, 7 in place of 10 lakh, and 4 in place of crore. So it will be 4 crore 79 lakh 27,045. Next, D1. So next is your 278036278. The number is 2780 D1 36278. In place of ones 8, in place of 10 7, in place of 100 2, in place of 1000 6, in place of 10,000 3, in place of lakh 0, in place of 10 lakh 8, in place of crore 7, and in place of 10 crore 2. So 27 crore 80 lakh 36,278. This will be your answer. Next, E and F you will do by your own. Now I am going to start with question number 3. Question number 3, write the following numerals. You have to write this words in numbers. हमें ये words को किस में convert करना है? Numbers. 45,06,009. So first you will write 9. 9 is in place of ones, 6 in place of 1000, and 45 is in place of lakh. So 9 in place of tens there is nothing in 0. In place of 100 0. In place of 1000 6. In place of lakh 5, and in place of 10 lakh 4. So 45 lakh. In place of 10,000 0. 45 lakh 6,009. Okay, next one is in place 2 is in place of ones, 40 tens, 100 9, and lakh is missing, and direct they have given you crore, so it is in C P C. lakh उन्होंने नहीं दिया, तो जो प्लेस वैल्यू नहीं दिया हम वहाँ पर क्या लिखेंगे? वी विल राइट द 0. जो प्लेस वैल्यू नहीं दिया वहाँ पर 0 लिखेंगे. ओके, वंस की प्लेस पे 2, टेंस की प्लेस पर 4, हंड्रेड्स की प्लेस पर 9, 1000 की प्लेस नहीं दिया इसीलिए वी विल राइट 2 times 0, 1000, 10,000. Then lakh is also not given. Then again lakh, 10 lakh, and then 28 crore. Okay, this will be your answer. Next, third one, C1 SEVEN 7, CRORE crore, THREE 3, HUNDRED 100, NINE 9. Okay, this is your number. 9 is in place of ones. 9 किसकी place पर ones. Then 3 is in place of 100, and 7 is in place of crore. Okay, तो ones की place पर हम क्या लिखेंगे? We will write 9. tens की place नहीं दिया तो we will write 0. जो यहाँ place value नहीं दिया वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0. Okay, 100 की place पर 3. Then after 100,000 0, 10,000 0, lakh 0, 10 lakh 0, and crore 7. Okay, जिसकी प्लेस वैल्यू नहीं दी वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? We will write 0 0 0. Okay, now next
D1, D ONE 1, CRORE crore, 1 crore, SIX 6, LAKH lakh, THREE 3, THOUSAND 1000, FIVE 5. 1 crore 6 lakh 3005. 5 is in place of ones, 3 is in place of thousand, 6 in place of lakh, and 1 in place of crore. Okay. Now ones की place पर क्या है 5, so we will write here 5. Tens की place पर कुछ भी नहीं है इसीलिए 0. Hundreds की place 0. 1000 3, 10,000 0, lakh 6, 10 lakh 0, and crore 1. So 1 crore 6 lakh 3,005. हम इसे ऐसा रीड कर सकते सी 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़. अब हम प्रॉपरली रीड कर पा रहे ना. अगर हम 0 नहीं लिखेंगे तो हम कैसे आंसर लिखते हैं 1, 6, 3, 5. हम ऐसे आंसर लिखेंगे. तो 1 किसके प्लेस पे है 1, 3, 10, 100, 1000. तो ये कितने हो रहे हैं? व्हाट विल बी द नंबर 1637. लेकिन आंसर क्या है 1 crore 6 lakh 3,005. सो विच वन इज करेक्ट? दिस वन. ओके. प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होनी, ये नंबर्स की प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हो रही. ओके. E1 E 3 crores, THREE 3, CRORE crore, SEVEN 7, LAKH lakh, FORTY 40, TWO2, THOUSAND 1000, EIGHT 8, HUNDRED 100, TN 10. In place of ones 10, in place of 100 8, in place of 1000 2, in place of 10,000 40, in place of lakh 7, in place of crore 3. ओके. सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 10, 1 0 1 10, 1 10, 100 8, 1000 2 4, then lakh 7, and then crore 3. 1s 10s 100, 1000 10,000, lakh 10 lakh, crore. So the answer will be 3 crore 7 lakh 42,810. Okay. Next we will go to question number 4. Write the following in words. ये numbers को हमें किस में लिखना है? Words में. It's very simple. You all know how to write it. Fourth one, question number 4. A1 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 is in place of ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. So how you will write in words? THREE 3, LAKH lakh, FOURTY 40, FIVE 5, THOUSAND 1000, THOUSAND 1000, SIX 6, HUNDRED 100, SEVENTY 7, EIGHT 8. 3,45,678. This is the way you will write in words. Okay, it's very simple. आपने ये
फोर्थ स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में भी किया है। सिर्फ आपको प्लेस वैल्यू लिखना है और उसके नंबर नेम्स 403 ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So TWENT by 20, SEVN 7, LAKH lakh, EIGHT 8, THOUSAND 1000, FOUR 4, HUNDRED 100, HUNDRED, okay, 100, 3, THREE 3, okay. Next, C1 4007 017, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So you will write it as FOURT by 40, LAKH lakh, SEVEN 7, THOUSAND 1000, SEVEN 17, बिकॉज हंड्रेड्स की प्लेस पर जीरो है इसलिए हम जीरो नहीं लिख सकते, सो वी विल राइट 17 डायरेक्टली. ओके, नेक्स्ट D 60,00277, 7 in place of ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So SIXT by 60, LAKH lakh, TWO2, HUNDRED 100, SEVENT by 70, SEVN 7, 60 lakh 277. थाउजेंड्स नहीं लिखिए क्योंकि थाउजेंड्स की प्लेस पर नंबर है क्या? नो, जीरोज आर देयर, सो हम यहाँ जीरो नहीं लिखते, सो वी विल राइट डायरेक्टली 277. ओके, now next I will start with question number 5. In question number 5, form new numbers by reversing the digit of the following numbers. Also write the number name of the numbers so formed. अब ये जो नंबर्स दिए हैं हमें वो नंबर्स को क्या करना है? रिवर्स करना है. रिवर्स मीन्स उल्टा करना है. ओके, सो फर्स्ट नंबर इज क्वेश्चन नंबर, इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ आप क्वेश्चन देख के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते. क्वेश्चन नंबर 5 is 6339201. ओके, दिस इज योर नंबर. सो हम इसको रिवर्स कैसे करेंगे? रिवर्स मीन्स हम ये लिखेंगे 1023963. ओके, हाउ वी विल राइट 1023963 means it will be ones, tens, 1023963. ओके, हम नंबर को उल्टा कर देंगे, मीन्स 163 पहले था तो हमने पहले क्या लिया? 1023963. ओके, सो 3 आफ्टर बिफोर 3 numbers, then 2, so it will be ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So TEN 10, LAKH lakh, 20,
THREE 3, THOUSAND 1000, NIND 9, HUNDRED 100, SIXTY 60, THREE 3, 63. ओके, हमने मतलब यहाँ से स्टार्ट करने की जगह यहाँ से स्टार्ट करें, सिंपल. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज. यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो कि नंबर चेंज कैसे हो गया. सिर्फ हमने क्या करें, यहाँ से स्टार्ट, दिस पॉइंट पे से स्टार्ट करने से के प्लेस से ये पॉइंट पे से स्टार्ट कर. ओके, उसको कहा जाता है रिवर्स. नेक्स्ट B1 5 6 3 0 9 5 7. Okay, how we will write this? 7 5 9 0 3 6 5. Okay, 1 2 3 1 2. So it will be ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, 75 lakh, NINT by 90, 1,000, 300, 65. Okay, this will be your answer for B1. Next, C is 407 06 211. So हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 112 112 60704. दिस साइड, ये साइड से स्टार्ट करेंगे. 112 60704. आफ्टर 3 1 2 3 1 2 1 2. So 1 crore 12 lakh 60,000 704. Okay, next D1. D is 155 39. Oh, sorry, it's D1 600 06 738. So answer will be 837 600006 322. Answer will be EIGHT 8, CROR crore, THIRT by 30, SCVEN 7, LAKH lakh, SIXT by 60, THOUSAND 1000 and 6. Okay, so this is your exercise 2.1. Remaining sums you can do by your own. We'll start with exercise 2.2. That is on page number 112 of your textbook. Okay,
Now I have explained you what is international place value here. In the first question, write the number name of the following numbers according to the international place value. So I explained you what is international place value. So how you have to write it? First, write the number. Question number first. A1 4 5 1 7 3 0 1. हम कॉमास कैसे देंगे इंटरनेशनल सिस्टम्स के 3 3 3 मीन्स बिफोर 3 नंबर बिफोर 3 नंबर। और रीड कैसे करेंगे? 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 and million. So it is written as number name कैसे लिखेंगे? FOUR 4, MILLION million, FIVE 5, HUNDRED 100, SEVENTEEN 17, THOUSAND 1000, THREE 3, HUNDRED 100, ONE 1. Again, this is the way we will write the number name. So हमने सबसे पहले क्या किया? Numbers को commas दिए with 3 3 before 3 3 numbers. Then we have written the place value. उसके बाद हमने place value लिखे. उसके बाद number name. Okay. Now second one. B number is 9340001. First, write the number 9340001, 3 comma before 3 numbers. Okay, so 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. So how we will write? 99, HUNDRED 100, THIRTY 30, FOUR 4, THOUSAND 1000, ONE 1, 934,000, ONE 1. Because in place of tens and hundreds 0 है तो हम यहाँ 0 नहीं लिख सकते. That's why we wrote ONE 1. Next, C1. C 70707971. Okay. First write the number 70707971. Commas before 3 number 1 2 3 comma here 1 2 3 comma here. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million. Okay. So SEVENTY 70, MILLION million, SEVEN 7, HUNDRED 100, SEVEN 7, THOUSAND 1000, NINE 9, HUNDRED 100, SEVENTY 70, ONE 1. Okay, this is the way you will write the number name. Next is your D. It's very simple. First you give the commas and then write the place value and then write the number name. So the numbers, next number is 957. Oh, sorry. 978
978579832. Okay, write the number 978579832, comma before the number 123, comma 123, comma. Okay, so ones, tens, 100, place value 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, and 100 and 100 million. Okay, so you will write here NINE 9, HUNDRED 100, SCVENTY 70, EIGHT 8, MILLION million, FIVE 5, HUNDRED 100, SCVENTY 70, NINE 9, THOUSAND 1000, EIGHT 8, HUNDRED 100, THIRTY 30, TWO 2. Okay, 978,579,832. This is your answer. Okay, next we'll go to question number. We'll start with question number 2. Question number 2 is write the numerals for the following numbers and place commas correctly. अब हमें ये वर्ड्स में दिए उसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है. सो 97,93,015. Okay, so 15 is in place of ones, tens, no hundreds के लिए कोई प्लेस नहीं, then 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So 5, 115, hundreds नहीं दिया इसीलिए यहाँ पर 0. Then 3, 5, 53,097. 97,53,015. This will be your answer for first one. Next is B1 is your SEVENTY 70, THREE 3, CRORE crore, FIVE 5, LAKH lakh, EIGHTY 80, FIVE 5, THOUSAND 1000, THREE 3, HUNDRED 100, FIVE 5. Okay, next is your 73 crore 5,85,305. So 5 is in place of ones. No number is given, so nothing in place of tens. H is in place of 100. 5 is in place of 1000. 80 is in place of 10,000. 5 is in place of lakh, crore, 10 crore. So 5, no number is there in place of 10, so 0. 3, 5,000, 85,000, 5 lakh, 0, 10 lakh, 30, 73.
So ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, 73 crore, 5 lakh, 85,305. We will read it like this. Okay. Next, C1. C is EIGHTY80, FIVE 5, LAKH lakh, TWO2, HUNDRED 100, 85 lakh 200. Okay. Now in place of let me change the color. In place of 100, 2. In place of lakh, 5. In place of 10 lakh, 8. Okay. So you will write it as ones 0, tens 0, 100 2, lakh 5, 1000 0, वंस की प्लेस पर कुछ भी नहीं है इसीलिए 0, टेंस की प्लेस पर कोई नंबर नहीं है इसलिए 0, 100 की प्लेस पर 2 है सो आई हैव रिटन हियर 2. इन प्लेस ऑफ 1000 0, 10,000 0, lakh 5, 10 lakh 8. So 85 lakh 200. This will be your answer. Next, D is 6 million. Let me D1 6 million 700 82,000 500 6. Okay, 6,782,506. Okay, in place of ones 6, in place of 100 5, in place of 1000 2, in place of 10,000 8, in place of 100,000 7, and in place of million 6. Okay, so in place of ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million. Okay, आप ऐसे भी लिख सकते हो. Okay, in place of tens there is nothing, so 0. In place of 100 5, in place of 1000 2, 8, in place of 100 7, and in place of million 6. So commas after 3. 6,782,506. This will be your answer. Okay. Next, E1. EIGHT8, HUNDRED 100, EIGHTY80, EIGHT8, MILLION million, EIGHT8, HUNDRED 100, THOUSAND 1000, 88, EIGHTY80,
EIGHT 8. Okay, so again in place of ones 8, in place of tens 80, in place of 100 that they have not given anything, 100 के place पर कुछ भी नहीं है, then 800,000, so 8 is in place of 100, 100,000, million, 10 million and 100 million. Now in place of ones 8, in place of tens 8, in place of 100 nothing is given, so 0. You can write your ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million. Okay. In place of 1000 nothing, 0. In place of 10,000 0. In place of 100,000 8. In place of million 8. In place of 10 million 8. In place of 100 million 8. So the answer will be 800 million 888 million 800,000 88. This is your answer. Okay. Next we are going to start with question number 3. Rearrange the commas according to the international place value system. हमें ये कॉमर्स इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू अरेंज करना है. ये कॉमर्स किसके थ्रू अरेंज है? इंडियन सिस्टम के. ओके, सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इंडियन सिस्टम इनटू इंटरनेशनल. सो फर्स्ट one is A. Question number 3. 8976 86 824 824. So it is written in Indian system, so we have to convert it into international system. So first we will write the numbers without giving the commas. हम numbers बिना comma दिए लिखेंगे. Then we will, in international system commas are given before 3 numbers. Okay, 3 numbers से पहले commas दिए जाते हैं. So 428 comma 8686 comma 798. Okay, this will be your method. इस तरीके से हम commas देंगे. B1 only you have to give commas. So आप numbers लिखेंगे और commas डालेंगे. 49 0 0 7 0 1 0 0. So answer will be 4 9 0 0 7 0 1 0 0. So comma after, before 1, before 0. Okay. Next C1 C 9805 45283. So how you will give commas? First write the number 9805 45283. Before 3 numbers 382 545. This is the method. Okay. Now next question number 4. In question number 4, fill in the blanks. 1 crore is equal to 100 lakhs. 1 trillion is equal to 1000 billions. Dash lakh is equal to 1 million. 10 lakhs is equal to 1 million. 10 million is equal to 1 crore. 1 lakh is equal to 10,000 and 1000 million is equal to 1 billion. Okay. Next, mark
periods with commas as per the Indian and international system. Means हमें ये numbers को इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों के हिसाब से कॉमास भी देना है और उसकी प्लेस वैल्यू भी लिखना है जो कलर्ड नंबर्स है. लाइक इन द सेकेंड वन 8 कलर्ड है तो 8 की प्लेस वैल्यू देंगे. फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, नंबर्स देंगे 2 8 3 0 7 5 4 6. अब इंडियन सिस्टम है तो कॉमास 1 2 3 then 2 2 and the value of 8 is on place of ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So 8, after 8 how many zeros? 1 2 3 4 5 6. So after 8 how many zeros will be there? 6 zeros, because 8 के बाद कितने numbers है? 6 numbers. So it will be 80,000. In international system, same number 2 8 3 0 7 5 4 6. After 3 1 1 2 3 1 2 3. So place value of 8 8 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. So 3 and 3. Okay, this is the way you have to write. इस तरीके से आपको नंबर्स लिखना है और कॉमास देना है इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी. नेक्स्ट इज 7 4 8 1 0 3 2 5 comma before 3 numbers 1 2 3 then 2 then 2. In place value of 1 1 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4. So it will be 10,000. Here 7 4 8 1 0 3 2 5 commas before 3 3 3. Place value of 1 1 1 2 3 4. So it will be 10,000. Okay, this is the way you have to write. Now next, question number 6. Write the following number name according to the international place value system. हमें ये जो numbers है उसके name किस system में लिखना है? International system में. Okay, so let me take the screen again. So question number 6. First A1. सबसे पहले हम question लिखेंगे. We will write down the question. What is your question? 87 lakh. Right here. EIGHTY 80. SEVEN 7. LAKH lakh. FIFTY 50. THREE 3. THOUSAND 1000. TWELBE 12. So first हम इस number name को number में लिखेंगे. Okay, 12 in place of ones, 0 hundreds ने दिया इसलिए 0, 1000 के पे 3, 10,000 0, lakh 5, 50 and 87. We'll write as 87 lakh 53,012. Okay, so ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000 and million. इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कैसे लिखेंगे अब? EIGHT 8, MILLION billion,
SCVEN 7, HUNDRED 100, FIVE 5, FIFTY 50, THREE 3, THOUSAND 1000, TWELBE 12. This is your international system. Okay, पहले हम ये इंडियन सिस्टम को नंबर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आफ्टर नंबर वी विल राइट इन इंटरनेशनल सिस्टम, जो हमारे लिए इजी होगा सॉल्व करने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज बी. SEVENTY 70, THREE 3, CRORE crore, FIVE 5, LAKH lakh, EIGHTY 80, FIVE 5, THOUSAND 1000, THREE 3, HUNDRED 100, FIVE 5. Okay, 73 crore 5 lakh 85,305. So 73 crore 5 lakh 85,305. Okay, so international system: ones, tens, hundred, thousand, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million. So we will write as SCVEN 7, MILLION million, 7 million, THREE 3, 700. 700, 3 million, 500, 80, 5,000, 305. Okay, this will be your answer. Okay, this will be the answer of B1. Indian system is converted to international system. Okay, so next is your exercise 2.3. In exercise 2.3, write the face value and the place value of the colored digit in each of the following numbers. हर एक जो नंबर कलर्ड है हमें उसकी प्लेस वैल्यू भी लिखना है और फेस वैल्यू भी. ओके, इट्स वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 1, A1 127 804. 8 is colored, means underlined. मैंने आप underline किया. ओके, so place value of 0 is equal to ones, tens. So you will write here tens. Face value of number will remain same. Face value of 0 is 0. Okay, फेस वैल्यू हमेशा नंबर की सेम रहेंगी, सिर्फ
प्लेस वैल्यू चेंज होगी. रिमेंबर दिस. B1 834 796 41. Place value of 4 is equal to ones, tens, 100, 1000. It will be 1000. And face value of 4 is equal to 4. Okay, this is the way you have to write. C1 1408563. Place value of 1. Place value of 1 is equal to ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So it will be TN10 LAKH lakh, 10 lakh. And face value of 1 will be 1. Okay. So 1 after 1, how many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can write like this also. It will be the place value. D. Now next is question number 2. Question number 2. Write the place value of the colored digit in each number. Also write the sum of the place value of the color digit. So अब हमें यहाँ क्या लिखना है? हमें ये कलर डिजिट की प्लेस वैल्यू भी लिखना है और इनका सम भी लिखना है. Like I will show you how to write. Question number 2. A1 814 549. 5 and 1 is the underlined one. सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखना है. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 is equal to ones, tens, 100. 5 into 100. Place value of 1 is equal to ones, tens, 100, 1000, 10,000. So 1 into 1. After how many numbers are there? 3, 4. 1, 2, 3, 4 zeros. Okay. It will be 500. It will be 10,000. This is this way. B1 2750 781. 7 and this 7. So place value of 7 is equal to ones, tens, 100. 7 into 100. Place value of 7 is equal to 7 into, after 7, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. So it will be 77 lakh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh. It will be 7 lakh. Okay. This is the way you have to write the place value. आपको सिर्फ काउंट करना है ये कौन से प्लेस पर है और उसके बाद जितने नंबर से उतने जीरोस मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट इज एक्सपांडेड फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म. अब ये नंबर्स को हमें क्या करना है? एक्सपांड करना है. हाउ यू विल एक्सपांड इट?
Question number 3A. 1032522. Expanded form means 1 after 1 how many numbers are there? 1 2 3 4 5 6, so 60. 1 2 3 4 5 6 plus 0. After 0 how many numbers? Does not matter. Plus 3. After 3 1 2 3 4. 1 2 3 4 plus 2. 1 2 3 plus 5. 1 2 plus 2. 0 plus 2. Okay, this is the way you have to write expanded form. B. 6409410. So 6 1, how many numbers? 1 2 3 4 5 6. So 1 2 3 4 5 6 plus 4. 1 2 3 4 5 plus 0 plus 9 1 2 3 plus 4 1 2 plus 1 0 plus 0. This is the expanded form. You have to write in this way. Write the expanded form in words. So how you will write in words? SIX 6 lakh. No need of writing in words. This is not. Okay. Next, question number 3. It's over. Question number 4. You have to write in standard forms. This we have already done in basics. हमने ये basics में already करे, इसीलिए मैं आपको 2 to sums ही explain कर रही हूँ. Then 8 1 4 5 2 3. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. You have to write the numbers. 4 7 3 8 6 9. Okay, this is the way you have to only write the numbers. Next, C1 is given. Question number 4. C is 5 0 0 0 0 0 0 0, means it's 5 lakh. 1 unit, tens, 100, 1000, lakh. 5 crore. 5 crore plus 4000 plus 6. So हम इसे कैसे लिखेंगे? 6 in place of ones, 0 tens, 0 hundreds, 0 thousand, 4000. Okay, 4000. To make it easy, सबसे पहले हम place values लिखेंगे, like ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore, because ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. So 5 crore. 6 in the place of ones, tens की place पर 0, hundreds की place पर 0, thousands की place पर 4, 10,000 0, lakh 0, 10 lakh 0 and crore 5. So 50004006 will be your answer. Okay, this is the way you will solve the sums. Now next, find the following. Question number 5. Numbers of 7 digit numbers means 9 0 0 0 7 times 0. 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so 7 digit number हो गया है. You have to write 7 digit number. Then अगर 8 digit number लिखना 9 1 2 3 4 5 6 7 zeros. 9 digit number 9 1 2 3 4 5 6 7 8. It will become 9 digit number. Okay, in the homework you will do the sums which we have done in the class.
एंड विच वी हैव नॉट डन, मतलब हमने जो सम्स करे वो भी करेंगे आप, और जो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन की नेक्स्ट सम आपको खुद को करने बोली, अब वो करने के बाद इस सम्स की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.